Department of Higher Education Faculty Development Program on Best Practices in Development of E-Content PowerPoint based video lectures batch 4. I, Dr. Neeraj Malviya from Government College Timarni, District Harda. The topic of this session is equivalence relation, that is Tulyata Sambandh. This is the topic of BSc final year, paper 3 optional, unit 1, and paper name is discrete mathematics. Learning objective of this session: at the end of this session, the learner will be able to define the relation and binary relation, explain the concept of reflexive, symmetric, and transitive relation, define the equivalence relation with counter examples. General background to learn equivalence relation. To learn equivalence relation, it is necessary to learn basic set theoretical concept. For this, learner can read, listen the following web links and YouTube links. This is the ebook links, and these are the YouTube links. Relation, Sambandh. We can start this session by means of explanation of relation and binary relation in mathematics. Definition 1. Let A and B be two sets. A relation from A to B is a subset of A cross B and is denoted by R. Binary relation, Dvichar Sambandh. Definition 2. A binary relation on a set A is a collection of ordered pairs of elements of A. In other words, it is a subset of the Cartesian product A cross A. More generally, a binary relation between two sets A and B is a subset of A cross B. Example of relation. Suppose there are four objects: ball, car, doll, and gun, and four persons: Rohan, Monu, Sonu, Pintu. Suppose that Rohan owns the ball, Monu owns the doll, and Sonu owns the car. Nobody owns the gun, and Pintu owns nothing. Then the binary relation is owned by each given as R equal to ball, Rohan, doll, Monu, car, Sonu. The pair ball, Rohan denoted by ball R Rohan means that the ball is owned by Rohan. Reflexive relation, Swatulya Sambandh. Definition 3. A reflexive relation is a binary relation on a set A for which every element is related to itself. For all A belongs to in a set A, A belongs to in a set R. Examples and counterexamples of reflexive relation. The relation is equal to
that is equality is reflexive relation. The relation is subset of, that is set inclusion, is reflexive relation. The relation divides, that is divisibility, is reflexive relation. And fourth is the counter example. The relation is greater than an irreflexive relation or anti-reflexive relation. It is the opposite of reflexive relation since x cannot be greater than x. कोई भी संख्या स्वयं से बड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए यह उदाहरण रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नहीं हो सकता है. सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध. Definition 4. If R is a relation on a set A, then R is called symmetric relation. If A is R related to B, then B is R related to A. In mathematical notation, that is, for all A comma B belongs to in a set A comma B belongs to in a set R, implies that B comma A belongs to in a set R. Examples of symmetric relation. The relation is married to is a symmetric relation. The relation is equal to, that is equality, is a symmetric relation. The relation is comparable to is a symmetric relation. Note, symmetry is not the exact opposition of antisymmetry. Antisymmetry is another relation, which is in mathematical syntax, if A is R related to B and B is R related to A, implies that B equal to A. This relation is called antisymmetric relation. Counter example from real life of symmetric relation. Mohan, Geeta. If Mohan is brother of Geeta, is Geeta is brother of Mohan? क्या गीता मोहन का भाई हो सकती है? नहीं. Answer is no, since Geeta is girl. Geeta cannot be brother of Mohan. So this is the counter example of symmetric relation. Transitive relation, sakarmak sambandh. Definition 5. A binary relation R over a set A is transitive if whenever an element A is related to an element B and B is in turn related to an element C, then A is also related to C. In mathematical syntax, for all A comma B comma C belongs to in a set A comma B belongs to in a set R, and B comma C belongs to in a set R, implies that A comma C also belongs to in a set R. यदि A comma B R में है, B comma C R में है, तो यदि A comma C भी R में मिल जाता है तो इस संबंध को सकर्मक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाता है. Example of transitive relation. The relation is greater or equal to transitive relation. The relation is subset of, that is set inclusion, is transitive relation. The relation divides, that is divisibility, is transitive relation. The relation implies, implication, is transitive relation. Counter example of transitive relation. Counter example plays very important role in mathematics. The relation is mother of is not transitive relation since, for example, Seema and Shobha. If Seema is mother of Shobha, Pinky,
एंड शोभा इज मदर ऑफ पिंकी। यदि सीमा माँ है शोभा की और शोभा माँ है पिंकी की, देन सीमा इज नॉट मदर ऑफ पिंकी। What is more, it is anti-transitive relation. Seema can never be the mother of Pinky. सीमा पिंकी की माँ कभी भी नहीं हो सकती है। सो यह एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल है ट्रांजिटिव रिलेशन का। इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। डेफिनेशन 6, a binary relation R on a set A is said to be an equivalence relation if and only if it is reflexive, symmetric and transitive. Equivalently, for all A, B and C in A, if A is related to A, that is reflexive. If A is related to B, then B is related to A, that is symmetry. And if A is related to B and B is related to C, then A is related to C. मतलब वह बाइनरी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, इन तीनों बाइनरी रिलेशन को संतुष्ट करता हो, ऐसा बाइनरी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध कहलाता है, जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, द रिलेशन हैज द सेम बर्थडे एज ऑन द सेट ऑफ ऑल पीपल is an equivalence relation. Example 2, the relation is similar to on the set of all triangles is an equivalence relation. Set of people में यदि हम relation ले रहे हैं has the same birthday, this is the equivalence relation. and यदि आप triangles का set ले रहे हैं और relation ले रहे हैं is similar to, तो यह भी equivalence relation होगा। Now I will assess students by objective questions. Equivalence relation is not necessarily reflexive, symmetric, transitive and anti-transitive. जैसा कि अभी मैंने स्टूडेंट को बताया कि इक्विवेलेंस रिलेशन तीन प्रॉपर्टी संतुष्ट करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है एंटी सिमेट्रिक हो, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन इज नॉट नेसेसरली, द आंसर इज एंटी सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 2, on a set of straight lines the relation is perpendicular of। यदि हम स्ट्रेट लाइन का सेट ले रहे हैं और रिलेशन ले रहे हैं इज परपेंडिकुलर ऑफ, आंसर नंबर 1, ए इज रिफ्लेक्सिव, 2 इज सिमेट्रिक एंड 3rd इज ट्रांजिटिव एंड 4th इज एंटीसिमेट्रिक। यदि हम स्ट्रेट लाइन का सेट ले रहे हैं तो क्या कोई लाइन स्वयं से परपेंडिकुलर होगी? आंसर है नहीं। क्या कोई लाइन यदि दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन तीसरी लाइन से परपेंडिकुलर है, तो क्या पहली लाइन तीसरी लाइन से परपेंडिकुलर होगी? आंसर है नहीं। क्या यदि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वो बराबर होंगी? आंसर है नहीं। तो बचता है अब अपना यही ऑप्शन, दैट इज सिमेट्रिक। कहने का अर्थ यह है, यदि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन भी पहली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज सिमेट्रिक। ट्रू एंड फॉल्स, सिमेट्री इज नॉट द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एंटी सिमेट्री। इज इट ट्रू और फॉल्स? सभी विद्यार्थी पढ़ेंगे और समझेंगे और इसका आंसर बताएंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सिमेट्री इज नॉट एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एंटी सिमेट्री। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो वह एंटी सिमेट्रिक होगा, यह जरूरी नहीं है।
Question number 4. The relation is married to is symmetric relation. Is it true or false? The answer is true. ये जो रिलेशन है इज मैरिड टू, यह सिमेट्रिक रिलेशन है. यदि एक पुरुष एक महिला से विवाहित होता है तो एक महिला भी एक पुरुष से विवाहित कही जाएगी. आंसर इज ट्रू. Assignment. Student can solve these questions so that the relation is greater than in the set n of positive integer is transitive but neither reflexive nor symmetric, so that the relation are equal to in a curly bracket a comma b such that a minus b equal to even integer and a comma b are integers in the set I of integers is an equivalence relation. This is the assignment. References and web links. Very famous book of discrete mathematics is C.L. Lewis, Elements of Discrete Mathematics, McGraw-Hill, न्यूयॉर्क. मध्य प्रदेश शासन की मंशा अनुरूप मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें भी रेफरेंस के रूप में ली जा सकती हैं. विद्यार्थी इनको पढ़ सकते हैं. यूट्यूब लिंक्स और ई बुक लिंक्स यहां पर दी गई है. थैंक्स टू ऑल. सभी विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ध्यान से इस सेशन को सुना.